हाँ तो लास्ट टाइम कुछ नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स इंटरप्ट कर रहे थे। अ, हाँ तो राइट, अपने दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, राइट। सो उन्हीं को ट्राई करते करने का वापस। तो जो पहला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड किया था वो था ये चीज, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड सी वेक्टर इज वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस थिंग, देन ये जो है प्रोडक्ट को क्या होगा। तो मतलब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, यानी सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा था, राइट। इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखा, ए के साथ में बी के साथ में, टर्न्स आउट कि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि हमें प्रॉपर कैलकुलेशन वाइज तो करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो कि हम डायरेक्टली यूज करके ये चीज न्यूमेरिक वैल्यूज की निकाल सके। सो एक ही तरीका बचता है, विल से सी वेक्टर इज कैपिटल A times A vector plus capital B times B vector plus let's say capital C times, कैपिटल C नहीं यूज करते, कुछ और यूज कर लेते, और इनफैक्ट यहाँ पे ए बी भी नहीं यूज करते, लेट्स से अल्फा बीटा यूज करो। सो अल्फा ए वेक्टर बीटा बी वेक्टर प्लस गामा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो सपोज अगर सी वेक्टर को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो तीनों रहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट टाइप के वेक्टर्स है, सो आई कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग। और फिर अपन ये चीज कैलकुलेट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, व्हाट विल दैट बी। सो ये चीज डॉट, ओके, ए क्रॉस ए वो तो जीरो हो जाएगा एनीवे, सो इट्स जस्ट बी वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस गामा टाइम्स ये सारी चीज क्रॉस ए वेक्टर, विच इज प्रेटी मच द सेम थिंग एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। सो beta times b vector cross a vector plus gamma times, so you can write this as a dot a यानी कि 1 basically, and then that times b vector minus a dot b which we don't know at this point, times a vector. So this thing will just be, let's see, a vector का coefficient ये है, so it's going to be negative gamma a vector dot b vector times a vector plus gamma b vector, then finally negative beta times a vector cross b vector. Okay, cool. So this thing is c vector cross a vector, right? Okay. So yeah, मतलब ये पूरा सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कोई एलिगेंट वे नहीं है सॉल्व करने का, you just have to do it. ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या, अपने को ये यूज तो करना पड़ेगा, प्लस अपने को ए क्रॉस बी, ओके ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि सी वेक्टर व्हिच इज ऑल ऑफ दिस, इट्स आल्सो जस्ट 2 टाइम्स ऑफ ये सारी चीज, राइट। तो किसी तो बोल रहे हो कि ये चीज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये सारी चीज प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब अल्फा। सो ए वेक्टर का अपन देखते हैं ना, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो अगर क्या समहाउ इनके यानी ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी, इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन समहाउ जीरो हो जाता है, तो कोएफिशिएंट जीरो हो जाने चाहिए। दैट्स द ओनली वे फॉर दिस टू हैपन। या सो अल्फा इक्वल टू -2 गामा okay, beta is 2 times gamma, right, because 2c cross a and stuff, so yeah, and gamma is so c vector equal to ये सारी चीज का डबल minus 2 beta plus the thing is कि यहाँ पे a cross b इन्होंने वापस दिया, तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ से you can see we can kind of solve this. Just wait a second ना, सॉरी स्क्रीन पे मॉइस्चर आ गया था। हाँ, सो क्या कर रहा था मैं, राइट। तो मैं गामा मिल गया सो बीटा +1 एंड ऑल दैट स्टफ। सो इसको ऐसे पुट क्यों नहीं कर लेते, गामा इज जस्ट -4 गामा +1, सो
गामा इज जस्ट 1/5. ऑफ कोर्स कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं मैंने क्लिक किए हो, बट एटलीस्ट अपने को मेथड पता है. सो बीटा इज जस्ट 2/5 एंड फ्रॉम दिस मे बी ओके अल्फा अपन ने नहीं भी कैलकुलेट किया तो चलता है, फर्क नहीं पड़ेगा. ओके तो अपने को अल्फा मिल गया, सॉरी अपने को बीटा मिल गया, गामा मिल गया. अब अपने को चाहिए, अपने को चाहिए ये चीज which is more or less is just CAB, right? Box of CAB, which is C dot A cross B. So C dot A cross B. The thing is कि ये जो चीजें हैं ये सारे सॉरी ये जो दोनों चीजें हैं ये इससे परपेंडिकुलर एनीवे, राइट? सो उनका डॉट इसके साथ तो जीरो हो जाएगा. सो सिर्फ ये चीज, राइट? सो इट्स जस्ट गामा, या इट्स जस्ट गामा, एग्जैक्टली. तो गामा ही अपना बॉक्स था बेसिकली. And gamma is 1/5, we already got it. So it's going to be C. 77 का C. Okay. So yeah, ये अजीब था. और फिर अपना ये चल था ना. Which of the following is tangent to mod y equal to 1 plus b cos? ये मुझे अभी भी नहीं पता है कि कैसे करते हैं, right? क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं. But still एक बार आप इसको ट्राई करके देखता हूँ. So drawn from some point, okay, whatever. Thing is, what it's saying is key slope. So let's say y is like plus minus of all that stuff. So plus minus 1 plus minus 2 e power x. तो slope हो जाएगा 0 and plus minus 2 e power x as well. x naught बोल देते. So अपनी जो line रहेगी that will just be y minus y naught upon x minus x naught equal to the slope, but the slope is just plus minus 2 e power x naught. Yeah, और यहाँ पे check हो जाएगा x minus x naught. In fact, you know what? No, let's just not do it directly. अपन directly x y की value put करेंगे. So y is 0, so just negative y naught upon x plus x naught. So it's like negative 3 upon 2 minus x naught. तो ये चीज़ तो क्या होती है? Y naught upon 3 upon 2 plus x naught, and that thing is plus minus 2 e power x naught. Cool. And what is y naught? Seriously, y naught is just this. So but add x to x naught, so it's going to be plus minus 1 plus minus 2 e power x naught is equal to, right? तो मैं लाइन जो है वो बता रहा हूँ कि लाइन एक्चुअल में क्या रहेगी. इट्स जस्ट प्लस माइनस 2 e power x naught into, ये क्या हो रहा है? Yeah, it should be like this. Right, I mean it's symmetric. So wait, this is actually going to work. Negative 3 upon 2 to that, and yeah, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो फिर सिर्फ minus y naught आ जाएगा, and then y naught is just having that plus minus. तो ये काम कर सकता है यार. बट पिछले बार फिर कैंसिलेशन क्यों नहीं हुआ था? अपने को क्या दो अलग अलग टेंजेंट्स नहीं मिलने चाहिए? क्या अपने को सेम टेंजेंट मिलना चाहिए? No, that can't be. How can we just get the same thing? Because वो प्लस माइनस कैंसिल नहीं होना चाहिए. It is not going to work like that. तो क्या हुआ इसमें क्या गलत किया है? So that is the way it is. कि जो भी y naught वैल्यू थी, and yeah, that is the way it is. ठीक है. और फिर अपने प्लस माइनस में कोई भी चेंज नहीं किया है. So it's all perfect. So plus minus 2 e power x naught, and then it's just 3 upon 2 plus x naught. So yeah, ये plus minus cancel हो जाएगा. That just leaves us with 1 plus 2 e power x naught equal to, so e power x naught से multiply करो, just basically what 3 e power x naught यहाँ पे, और plus 2 x naught e power x naught. So in fact दोनों lines अपने को same ही चीज दे रही है. Isn't that weird? Yeah, it's very weird actually. राइट, स्लोप में वो सही से, यस, सब कुछ सही से हुआ इनफैक्ट, और y की वैल्यू से कुछ सही से आई. सो नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि यहाँ पे 0 था. अगर 0 नहीं रहता तो फिर अलग अलग होता, राइट? नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड थिंग इज कि मॉड y है, दैट मींस कि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, और ये लाइन x एक्सिस पे रहने वाली है. सो मे बी, या इट कैन बी कि दोनों लाइंस इनफैक्ट सेम ही चीज हो, but we'll see. So it's just what 1 equal to e power x naught
plus x naught e power 2x naught e power x naught. This thing is our line. No, this thing was a condition actually, and the line is ये वाली चीज. या लाइन ये चीज है और कंडीशन चीज है. एक्चुअली लाइन ये चीज होने से अच्छा ये वाली चीज कहाँ पे गया है. राइट, इसमें डायरेक्टली -3/2 और डालना थोड़ा सा काइंड ऑफ नॉट गुड, बिकॉज ठीक है ना, अपने को जब x नॉट मिल जाएगा देन वी कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट y नॉट इज, एंड देन वी कैन डेफिनेटली गेट एवरीथिंग. तो कैसे सॉल्व करें इसको? e पावर x नॉट इंटू 2x नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू 1. एनी आइडियाज? डेरिवेटिव निकालो इसका. नहीं, नॉट द बेस्ट आइडिया. इसके सॉल्यूशन चाहिए अपने को. एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है x नॉट इक्वल टू 0. राइट, दैट्स वन थिंग. कोई और सॉल्यूशन है क्या इसमें? लोग यहाँ पे e पावर x नॉट आएगा. It's like 1. It's like 2x naught plus 1 equal to e power negative x naught. लोग यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है. लोग ये जो चीज है एक लीनियर बस एक लाइन हो जाएगी. राइट, सो 2x naught plus 1 समथिंग लाइक दिस, एंड e पावर नेगेटिव x naught इट्स तो इसका इनफैक्ट एक ही ओके, सो 0 पे भी 1 हो जाना था. सो इट्स एक्चुअली लाइक दिस. इसका एक ही सॉल्यूशन आता है. ओह हाँ, इसका एक ही सॉल्यूशन आता है. दैट्स जस्ट एट x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 व्हाटएवर. सो यू जस्ट गेट इट. x नॉट इज इक्वल टू 0. डन. सब कुछ मिल गया हमें बेसिकली. सो y नॉट will just be what, plus minus 1 plus minus 2 into 1, so it's plus minus 3, and ये जो चीज है that's just plus minus 2 basically at this point. So y minus y naught, that's minus of plus minus 3 upon x minus x naught. X naught is just 1, so x minus 1. Sorry, x equal to 0. Sorry, x equal to 0, 0, 0. Yeah, now it's good. Okay, so x equal to 0, and this is equal to plus minus, so plus minus 2. So y is equal to plus minus 3 plus minus 2x. Done. Y equal to 2x plus 3 or negative 2x negative 3. So or more like 2x plus minus y plus 3 equal to 0. That looks better. तो क्या है? 2x plus y equal to plus 3 equal to 0. Okay, yes, and 2x minus y. So a and b, 79 का a and b. शायद से मैं कर भी लेता अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता तो, बट बीच में मुझे इंटरप्ट कर दिया गया. ओके, 80 is the equation. This equation represents, so 2 into a plus 1 x square plus 3a y square minus 4 into a plus 1 x minus 12 a y plus 16 equal to 0. Look, x square है, y squared है, represents circle, ellipse, point, pair of straight lines. ठीक है, अलग अलग a की वैल्यूज के लिए. सो लेट्स ट्राई आउट a इक्वल टू -1 फर्स्ट. इफ a इज इक्वल टू -1, ये तो मर गया एंड ये भी चला गया. सो इट इज 3ay स्क्वायर्ड, एक्चुअली -1 है ना ये, सो -3y स्क्वायर्ड एंड प्लस 12y plus 16 equal to 0. So 3y squared minus 12y negative 16 equal to 0. 16 times 3, that's 48. 48 can be written as 8 and 6. Okay, no, 8 and 6 won't work. We'll negative 14 later. That's not good. 48 can be written as 4 and 12. No way. फिर क्या? It's not making any sense. Yeah, we did put a equal to -1. ये सब मर जाएगा उसमें से और it will be this thing. So it should work, I think. क्या गलत हो गया? quadratic formula यूज करना पड़ेगा. I don't think इसे और कुछ. अब -48. Come on. 4 and 12 doesn't work. Nothing works. 8 and 6. No. 12. Okay, वो तो हो चुका है. 24 and 2. No. ये इवन नंबर है, सो मैं सारे इवन नंबर से स्प्लिट कर रहा हूँ एंड इट डजंट वर्क. 2 सबसे छोटा इवन नंबर था और ये स्टिल काम नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये काम नहीं करता. अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो y would just be
इसका बस तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहा देन ऑफ कोर्स y की तो सॉल्यूशन सेट वी आर डन, बेसिकली इट्स जस्ट टू लाइंस. So it is just 12 squared, which is like 16 into 9 minus 4 is equal to 9, so plus 4 into 16 into 3, which is what, 16 into 3 into 3 plus 4 7. Yeah, it's positive anyway. So yeah, इसके दो solutions रहेंगे. अगर a equal to -1 है then it is in fact just a line. So it's a line if a pair of lines, right? If a equal to -1, so D works. Okay. A point if a equal to 1. अगर a equal to 1 है then it becomes 4x squared. Wait, what, a point? Let's see वो क्या होता है. So a equal to 1 plus 3y squared minus 8x. Looks weird, you know. कहीं भी और कुछ भी नहीं है. Oh, okay. We'll see. So minus 8x and minus 12y, then it's just plus 16. I'm guessing कि ये squares में convert हो जाएगा. So let's see, 4x square minus 8x, 4 into x square minus 2x plus मैं insert कर रहा हूँ तो वहाँ पे plus 12 हो जाएगा. It's just plus 3y squared minus 12y plus 12. And this is what, it's just 4 into x minus 1 squared, और फिर यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लूँगा, so it's just y squared minus 4y plus 4, so it's just y minus 2 का square. And yeah, it's equal to 0. So एक ही तरीका है कि x equal to 1, y equal to 2. So it's just a point if this happens. So yes, कहाँ पे चला गया, कहाँ पे चला गया अपना क्वेश्चन? Right, it's a point if a equal to 1. So C works, D works. Okay, and ellipse a circle. Okay, circle if a equal to 2. Let's try that out. And it's an ellipse if a. So उसके लिए I think मुझे थोड़ा सा इसको proper लिखना पड़ेगा. So let's do it. 2 into a plus 1 into x square minus 2x plus 1, and then plus 1 है तो मुझे minus 2 into a plus 1 भी करना पड़ेगा यहाँ पे. Yes, and then well y squared में ये सब है, right? So plus 3a into y squared minus 4y. मैं पहले ही कर सकता था, नहीं मैंने इतना पूरा क्यों किया आखिर? ओके, प्लस 4 एनीवे, सो प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा minus 12a. ओके, प्लस 16 इक्वल टू 0. ये अपना एक्चुअल इक्वेशन है. दैट जस्ट मीन्स 2a प्लस सॉरी 2 into a plus 1 into x minus 1 का स्क्वायर प्लस राइट शिफ्टेड by minus 2 का स्क्वायर equal to, so let's look at this, 2 into a plus 1 plus 12a, that's just 14a plus 2 minus 16, so minus 8, that is 14 right there. So 14 into a minus 1. Oh, that's cool. So yeah, a should be bigger than -1 for this to be positive, so only in that case I can actually get ellipse. Oh, in fact a be positive, so it should like a is bigger than 1 because ये भी positive लगेगा फिर. So a should be bigger than 1. So it has to be an ellipse. What happens if a is bigger than 2? If a is bigger than 2, then this thing is bigger than 3, this thing is bigger than sorry, this is bigger than 6 actually. So okay, when it's actually equal to 2, ये दोनों equal हो जाएंगे, and that does make sense. Or yeah, sure. But look, even अगर वो a 2 से छोटा होता और वो just 1 से बड़ा होता, even then you would just have got an ellipse. What's the big deal, huh? Why should be bigger than 2? Whatever. So a and b also work. Even though I think b पूरी condition नहीं है ellipse होने की, but hey, it works, right? Okay, 81. 81 is solutions of this dy upon dx square minus 2 into, seriously, what is this? Okay, dy by dx plus 1 equal to 0, maybe. Oh, come on. Let's say y equal to kx, जहाँ पे k जो है वो एक function x का, then yeah, k is a function of x. Then you can write this thing dy upon dx square. Wait a second. Why is it like that? इसमें d square y upon dx square नहीं है. So, oh, it's a quadratic in dy by dx. Wait, why?
minus 2. Is this some kind of... Oh yeah, it is. Okay, factorizable somehow. Okay, 1 यार ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, सो ऐसे डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कैसे सकता है? बट स्टिल -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लाइक ये मिडल टर्म रहेगी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो एक्स माइनस वाई स्क्वायर, सो उनका मल्टीप्लिकेशन दैट्स मोर लाइक एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ऑफ कोर्स एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। गेस व्हाट, इनका एडिशन क्या होता है? ये या makes perfect sense, so just gonna break it like that, huh? Yeah, so ये क्या हो जाएगा? इसको मैं m यूज करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स के लिए, सो m स्क्वायर्ड माइनस, सो पहले अपने को इसको x प्लस वाई स्क्वायर्ड और वो सब में लिखना पड़ेगा, राइट? सो इसका भी व्हाट, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई m, and then minus x minus y upon x plus y m, and then plus 1 equal to 0. That's what this thing is. So it's just m common low, m into m minus of x plus y upon x minus y, और यहाँ से minus x minus y upon x plus y common low, and it becomes m minus of same stuff. So yeah, so right, m माइनस, ठीक है, वो सारी चीज इक्वल टू 0, सो दो सॉल्यूशंस इसमें। या m इज इक्वल टू आइदर इट्स इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y, और इट्स इक्वल टू x माइनस y अपॉन x प्लस y। ओके ओके फाइन, एंड इसके बाद में फिर अपने को y इक्वल टू kx यूज करना पड़ेगा, आई गेस, और इज इट नेसेसरी? Is it necessary? Maybe. Let's just do it, in fact. So kx, this is going to be dk upon dx times x plus plus k, and that's equal to 1 plus k upon 1 minus k. Cool. And that means dk upon dx times x, that is equal to ये सारी चीज, so minus k of course. Yeah. So 1 plus k upon 1 minus k minus k, minus k plus k squared. So it's 1 plus k squared upon 1 minus k. That's what this is. So yeah, 1 minus k upon 1 plus k squared times dk, that is equal to dx upon x, something like that. Yes. दूसरे केस में क्या होता था, ये रेसिप्रोकल लेता था, तो यहाँ पे let's say it's like plus minus or minus plus, it will still work, right? So you can basically say कि it's just minus plus, and this is still going to be plus no matter the condition, because actually no, let's go case wise, who knows, अगर कुछ भी गलत हो गया तो। so पहला solution देखते हैं एटलीस्ट। अच्छा मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? एक नई प्रॉब्लम आ गई, 1 minus k, that's good and all, but ये चीज को कैसे सॉल्व करेगा? ओके मेबी इसको जस्ट स्प्लिट करो, सो dk upon 1 plus k square, उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? tan इनवर्स ऑफ k, ओके, एंड देन नेगेटिव वो सारी वो चीज एक्चुअली इतनी हार्ड है, जस्ट नेगेटिव 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus k square, 1 plus k square पॉजिटिव होता है एनीवे, सो y put a mod, that's equal to natural log of mod x plus some kind of constant or whatever, that is one of the things, and then k is just x upon y, तो tan इनवर्स, राइट, ये एक सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा सॉल्यूशन रहेगा जब इसमें नेगेटिव आ जाएगा, देन इन दैट केस हाँ सेम चीज रहेगी, बस यहाँ पे अलग चीज रहेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x प्लस y, सो 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k, सो यहाँ पे ये भेजने के बाद में इट जस्ट बिकम्स, well वो still cancel होगा, it's just 1 plus k squared upon 1 minus k in that case. Hey wait, what, why is this? हाँ मैंने क्या सेम चीज कर दी क्या? नो और ये चीज जो रहेगी 1 प्लस के इसमें ऊपर आया था, 1 माइनस के अगर ऊपर था तो 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के माइनस के, दैट वुड हैव बीन, ओह नो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट, सॉरी ये मैं वापस सेम ही रिपीट कर रहा हूँ गलती से। सो दूसरे केस में ये नहीं हुआ था, इट शुड हैव बीन 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के, एंड दैट माइनस के, सो then that's very different in fact. Yes, it's going to be what, 1 minus 2k k squared over there, not good at all.
हाउ, क्या कैसे हो रहा है यार? फिर पहले ऊपर वन प्लस के था और नीचे वन माइनस के था. ओके, दैट वाज वर्किंग आउट. This is not working out because okay, it is 1 as 2k and then negative k square and whatnot. Does it feel good? 1 plus k. ये चीज, you seriously. Okay, so this is what 2 minus of k plus 1 का square and that upon 1 plus k square. So जो दूसरा solution रहेगा for that you just need, oh no, okay, that's natural log हो गए, वो सारी चीजें आएगी इसमें, तो वो तो और घटिया रहेगा. बट वो आई डोंट थिंक वो यहाँ पे है इनफैक्ट. कैसे हो भी सकता है, who knows. Yeah, this is what, this is x dk upon dx. This is for the other solution. तो अपने पास में ये एक solution था, उसके अलावा ये एक solution है. We'll try to do it. तो ये सारा गया, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था. So dk upon 2 minus, okay, of course 1 plus k. Why is this square? No, it should just be 1 plus k, not square. So yeah, it's gonna be what, half of d1 plus k square upon, no, it is not that bad actually. So negative half आ जाएगा यहाँ पे, so it's just negative half natural log of 2 minus k plus 1 का square. ये बहुत लंबा हो रहा है, square यहाँ पे चाहिए था. Okay, cool. And this is equal to natural log of x mod x plus some kind of constant. What that means is, okay, यहाँ पे ये डाल दो, it's just negative 2 like that. So basically what, negative, okay, whatever, natural log of x power negative 2 plus some kind of constant. What that means is कि 2 minus of k plus 1 squared, that thing, it's mod में है. Yes, ये mod में है, and it's something just bigger than 1, maybe, may not be, okay, whatever. That's equal to प्लस माइनस आपको डालना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक. सो जस्ट प्लस माइनस, बिकॉज मॉड में दोनों भी थे, सो फर्क नहीं पड़ रहा. के इज अ पॉजिटिव, ये तो वापस मैं रीयूज कर रहा हूँ नीचे. सो ए टाइम्स एक्स पावर नेगेटिव 2, एक्स पावर नेगेटिव 2, सो एक्स पर मल्टीप्लाई कर डालो एंड देन इट विल जस्ट बी व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस, सो x अंदर जाएगा, इट जस्ट बिकम्स x plus y का स्क्वायर, सो इट्स जस्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू प्लस माइनस a is just some positive constant, and then this just becomes x squared plus y squared plus 2x, उधर से उधर भेज रहा हूँ मैं, and then minus 2x squared. So oh नहीं, फिर यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं, just x squared minus y squared minus 2xy plus minus a minus plus a, but whatever, plus minus a equal to 0. Got it. और प्लस माइनस a को इनफैक्ट सिर्फ प्लस a लिखो, जहाँ पे अब a एक कांस्टेंट है, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव. So this is nice. You got one solution at least. Oh no. But this is like, okay, ये quadratics में आ गया और थोड़ा सही नहीं हुआ ये. Oh, अच्छा नहीं है, ये भी solutions में है. So yeah, y squared plus 2xy minus y squared equal to some kind of constant that works perfectly. This thing doesn't work because अपने को y square और 2xy के क्वेश्चन सेम साइन के चाहिए, सो नहीं. a works, और ये चीज का अपन ने आगे बढ़ाया नहीं, उसका भी करना पड़ेगा. सो tan inverse of y upon x, ये सारी चीज इक्वल टू लेट्स से हाफ natural log of, so 1 plus k square वगैरह होने वाला है यहाँ पे, राइट? But yeah, so it's like half natural log of x square basically. So x square times 1 plus k square, that's what it's going to be. It's just x square plus y square and then plus some constant, we don't care about that. Yeah, उसको मैं लिखता हूँ 2 tan inverse of y upon x, yeah, is equal to natural log of x square plus y squared plus some kind of constant. Cool, that's done. Nice. So no, that's not what we want. This is what we want. So B works and A works. 81st का AB. यार ये तो बहुत लंबा था, सर क्यों दिया इन लोगों ने इतना लंबा क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. 82 is a hyperbola with TA equal to a, what does it?
transfers x is okay equal to 2a and conjugate x is equal to 2b has center C and one focus at p 6, 8. Center C, focus at 6, 8 and it's two direct okay like this. ठीक है ना, तुम्हें दो डायरेक्ट्रिक्स दी है, तुम उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढ सकते हो, तुम्हें एक फोकस दिया है, तुम उसका डिस्टेंस ढूंढ सकते हो दोनों डायरेक्ट से. ओके, इट कैन डेफिनेटली वर्क आउट. तो अपने को सिर्फ इसकी इसेंट्रिसिटी ढूंढनी है, राइट. सो अगर मैं नॉर्मल हाइपरबोला देखूं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो उसमें लेट्स से ये तुम्हारा फोकस, लेट्स से ये तुम्हारे वर्टेक्सेस है, राइट. और इसेंट्रिसिटी इसमें बिगर देन 1 रहती है. दैट जस्ट मींस कि तुम्हारा ए वैल्यू यहाँ पर रहेगी कोई. सो दीज आर योर डायरेक्ट्रिक्स, राइट. उन्होंने इनके बीच का डिस्टेंस दिया, उन्होंने इनफैक्ट ओके तुम्हें एक फोकस दे दिया ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते हो एंड दैट विल बी इट. दैट्स ऑल यू नीड एक्चुअली, बिकॉज ये जो चीज रहेगी दिस विल जस्ट बी व्हाट ए इनटू, तो लुक ये चीज ए थी, सॉरी ये चीज ए थी और ये चीज थी ए ई and it's just a into 1 plus e in that case, and this thing is just a into 1 minus e. Similarly, a e sorry a into e minus 1 because a e plus b. So once you know what these two are, basically is if ये दो linear equations हो जाएंगे which you can definitely solve. तो हाँ, nice. और या फिर तुम सिर्फ इसको डिवाइड कर सकते हो. So just you need to find what this is. क्या पॉइंट था? ये पॉइंट है अपना 6,8 को इसमें फीड करो. I mean, okay, वो नेगेटिव होने वाला है anyway, so just find the mod. So 3 times 6 is 18, 4 times 8 is 32, 32 plus what? 32 plus 18, I think, so it's only 50. Oh, of course, it was like 2 into 25, so 50. 50 minus 10 is 40, और इस केस में 50 plus 10, which is 60, but wait, कैसे ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तो सेम इस पे नहीं होने चाहिए थे. इट्स -10, सो 3x plus 4y, राइट. तो 3x plus 4y कुछ इस टाइप का एक वेक्टर है. एक केस में -10 है, सो समथिंग लाइक दिस, और एक केस में +10 है. 6,8 goes over here. ओह या, ये फोकस है, राइट. तुम्हें ये डिस्टेंस मिल गया एंड तुम्हें ये डिस्टेंस मिल गया इनफैक्ट. ओह, ये डिस्टेंस बिकॉज फोकस टू फोकस वाला सही कर रहा हूँ मैं, उसमें तुम्हें गड़बड़. सॉरी ये फोकाई है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसी रहेगी जिसमें ए अपॉन ई वगैरह रहेगा. मैं क्या कर रहा हूँ आज. ओके, स्टार्ट अगेन विद दिस हाइपरबोला स्टफ. बट तुम्हें एटलीस्ट डिस्टेंसेस मिल गए. एक रहेगा, सो फोकस तुम्हारा यहाँ पर है, एक रहेगा 40 एंड दूसरा रहेगा 60, पूरा का पूरा 60. ओके कूल. अपन बात करते कि एक्चुअल में क्या सिग्निफाई करता है. तो तुम्हारे पास में ऐसा है, ये जो पॉइंट्स है ये वाला फोकस है, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, a टाइम्स e. यहाँ पे पहली डायरेक्ट्रिक्स है which is having x coordinate a upon e. यहाँ पे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है which has x coordinate, यहाँ पे x coordinate negative a upon e, right. तो ये जो डिस्टेंस है that's just a e minus a upon e and that upon, okay, that's actually what, that's equal to 40 and a e minus of plus a upon e, that is 60. Cool. So we can just kind of divide this, and since what e square minus 1 upon e square plus 1 is 4 upon 6. That's it. You don't even need to know कि a क्या है. Actually, you do need to know a क्या है. Shit. Not good. Definitely not good. Okay, you need to find everything, huh? Okay. So ae is 50 and a upon e, so subtract 50, is just 10. So divide, just have e squared equal to 5, so e is square root 5. Cool. And that means a is what, 10 square root 5. Done. So well, इसमें a 2 square root 5 क्यों दिया फिर? That doesn't make sense. Yeah, and this should definitely be square root 5. So no, it's not 40. God,
No, it's 40 upon 5 because यहाँ पे 3 और 4 भी थे, so 40 upon 5, 60 upon 5, that's supposed to be 8 and 12 actually, so 8 and 12, हाँ, और ये चीज़ भी 8 and 12 रहेगी, so this is all is wrong, but E is still square root 5, but this is 8 and 12, so A is actually A upon E is smaller, god damn it, so ये 8 और ये 12, हाँ ये 8 and 12 है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करने में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 4 उसका हाफ 2 और एंड करने पे 20, so 10, there we go, so still A is just square root 5, but A is 2 square root 5, cool, so 2 square root 5 and E is square root 5, so A and B, ये चीज क्या है, square root 15 क्या, A and B 82 का 83 83 is, oops, the value of sine 27 degree minus cosine 27 degree is equal to okay, so sine 27 degree is equal to, thinking about maybe putting a square root 2 right, square root 2 of, so sine 27 degrees, cosine 45 degree, all that stuff, right, so more like, yeah, sine 27 degrees will be smaller in degree, so it's a sine of 27 degree minus 45 degree, so negative sine of 45 degree minus 27 degree, so 45 minus 27 is what, it was 8 and 18 degree basically, no big deal, sine 18 degrees is actually very doable, so cosine 36 degrees, sine 15 degrees, these are actually very doable, just, oh yeah, of course, square root 5 minus 1 upon 4, that is what sine 80 degree is, isn't that right, and then 36 degree के लिए cosine 36 degree के लिए square root 5 plus 1 upon 4 लेते हैं, so negative square root 2 times that, so negative, और फिर square root 2 की वजह से यहाँ पे 2 square root 2 हो जाएगा, but isn't this supposed to be multiple choice, then why are we doing it again? Okay, ये क्या होता है, 3 minus square root 5, okay, तो square root 2 से multiply करो ना, it's going to be what, 6 minus 2 square root 5 in that case, so if 6 is just 5 plus 1, so it just becomes square root 5 minus 1 square, so yes, it is the same thing as this thing, okay, cool, और यहाँ पे नहीं होगा वैसे क्योंकि 10 हो जाएगा, that doesn't make sense, similarly यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, so it's gonna be A and C, 83 का A and C, done, next, 84, consider the function f of x equal to this function, okay, so cosine inverse of 8x power 4 minus 8x square plus 1, not a square, but whatever, so what about this function, it goes from negative 1 to 1 to 0 to pi, okay, you can see कि 1 upon 2 पे इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू रहने वाली है, so 1/2 से तुम 1 पे जाओगे और फिर 0 पर जाओगे तुम्हें सेम वैल्यूज मिलेगी, बट जब नेगेटिव 1 पे जाओगे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी नेगेटिव 1 पे, नेगेटिव 1 पे क्या हो जाएगा, 8 minus 8 plus 1 which is 1 basically, and minimum value रहेगी when you go to x equal to 1/2, so 1/2 किस वैल्यू कर जाएगी, but 8/16 is 1/2 and 8/4 now minus 2 is 1, so it's going to be what, negative 1 plus 1/2 is negative 1/2, so negative 1/2 is the new value है, okay, whatever, so f is not differentiable at 3 points, what, okay, इसको ग्राफ करके देखते हैं, so negative 1/2, huh, and it goes from what, 0 to pi, q यार, okay, so this is what, this is 1 and this is supposed to be half होती है, थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं इसको, whatever, so ये 1 है this thing is half and यहाँ पे negative 1 रहेगा
यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 1/2 की मिनिमम वैल्यू है, एंड 1/2 पे नेगेटिव 1/2 वैल्यू, राइट? सो समवेयर लाइक दिस, एंड दैट मीन्स और 1 -1 पे इसकी वैल्यू 1 रहेगी, which is maybe like twice of this thing, so it goes like this. well, 0 पे वैल्यू क्या है इसकी? 0 पे इसकी वैल्यू है just 1. Wait, what? Minus b upon 2a, that has to be, oh no, x square equal to minus b. Okay. It's in quadrat. It's a biquadratic. Come on. No, but okay, this is bad. Even function stuff. Okay, got it. So x square equal to 1/2. That means x is plus minus 1/square root. 1/square root is slightly bigger than 1/2. So यहाँ पे कहीं तो होगा और ये यहाँ पे कहीं तो होगा और यहाँ पे अपने को मिनिमम वैल्यू समझ आ रही थी, which was of course is -1/2, -1/2, और yeah, exactly -1/2. Okay, so like this and this, and 1 और -1 पे अपने को मैक्सिमम मिलेगी, I guess. सिमिलरली 0 पे अपने को मैक्सिमम मिलेगी बिकॉज एक्चुअली ऐसा हो जाएगा. ओके, सो 1 1 एंड 1 right there. दिस इज लाइक ओके. तो हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लुक, x इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव देखो यार, इसका डेरिवेटिव है, मतलब ये जो फंक्शन रहेगा वहां पे 0 हो जाएगा. सो ओके, वो कंटिन्यूस है, स्टिल वो कंटिन्यूस है, ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है. मेन प्रॉब्लम है कि कोसाइन जो है वो थोड़ा सा नॉट सो गुड काइंड ऑफ फंक्शन. कोसाइन इनवर्स, सो जब भी पॉजिटिव रहेगा तब सो लेट्स सी, इतने रीजन में ये पॉजिटिव है, राइट? फिर इतने रीजन में नेगेटिव है, फिर इतने रीजन में पॉजिटिव है, और फिर नेगेटिव है, और या जब ये पॉजिटिव रहेगा तो हमारा जो थीटा वैल्यू है, सो कोसाइन इनवर्स वैल्यू एक्चुअल फंक्शन, इट गोज फ्रॉम 0 to π/2, और जिसमें भी ये नेगेटिव है, इट गोज फ्रॉम it does go from negative pi. So like यहाँ पे 0 negative π/2 से स्टार्ट करेगा, फिर पाई तक जाएगा, पाई तक जाने की कोशिश करेगा till this point, और फिर ये वापस उल्टा जाने लगेगा. So it is actually differentiable at all points, but why is it not? It is in fact differentiable. F of x equal to cosine x has 4 solutions, huh? Equal to cosine x, say. Where? ये 1/2 वगैरह एक टाइप की चीज है ना, 1/square root. Oh hey, wait a second. 1 पे so x equal to 1 and -1 पे तो 1 हो रहा है, और 0 पे भी सेम चीज हो रही है, तो symmetric about that. This is like 1/square root for some reason, whatever. Okay. 3 points of local extrema in -1 to 1. Yes, it does. यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, so 3 points, correct. So 84 का B तो correct at least. F of x equal to cosine x has 4. Cosine x, seriously. So 1. Okay, π/2, that is, okay, π/2 1 से बड़ा है. This means कि actually cosine x बहुत ही चपटा टाइप का कर्व हो जाएगा. मतलब ये इससे in fact 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, which is no, it's not 4 solutions, just 3 solutions, because यहाँ पे 1 है, right? And then यहाँ पे इसका भी मैक्सिमम है. So ये एक solution, ये एक solution, ये एक solution, no other solution. So yeah, C is just wrong. F of x is increasing in 0 to 1. So in 0 to 1, this is increasing actually. No, first of all वो एकदम positive है, एकदम 1 पे आ रहा है, तो it's 0, and then it does start to increase, but eventually π/2 पे आता है, यहाँ तक increase होगा, right? 1/square root 2 तक, but उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब ये चीज इंक्रीज हो रही है. सो नेगेटिव पाई, सॉरी, अब ये पाई से वापस जा रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट differentiable at 3 points. What are you talking about? It is very differentiable. So yeah,
cosine inverse differentiable. Right, that's it. Just B is the only thing. Okay, 85th. 85th is a square matrix A with elements from the set of real numbers set to be orthogonal if its transpose is the same as its inverse. Yes, if A is an orthogonal matrix. Wait, what? Seriously? Say it to be like that? Okay. Here's a Q. Key. Oh yeah, of course, it's gonna be like that because जब तुम transpose से multiply करोगे A को, then you are just taking a dot products of the column vectors actually. So if it's gonna be the identity matrix, then that just means कि yeah वो pairwise dot product 0 है, except of course A dot A जो रहेगा वो तो 1 ही है. So of course if A is an orthogonal matrix, then A transpose is orthogonal. A transpose is also orthogonal. Wait, what? No, not necessarily, is it? Like, okay, column vectors वहाँ के orthogonal है, that is granted, but okay, A transpose is the same thing as A inverse, huh? So what you mean is like A times A transpose is equal to 0 if that happens. Wait, if it's A inverse, that also means the A transpose times A is equal to 0, but then A is just A transpose of A transpose ka transpose. So that means yes, A transpose is also orthogonal. Very weird. Okay, yes, it's also orthogonal. A inverse is orthogonal. I mean, yeah, it's just the A transpose, so it is orthogonal. Oh yeah, actually that makes more sense क्योंकि A inverse orthogonal होना ज़्यादा better लगता है. Okay, adjoint of A is A transpose. Is it? Adjoint of A is A transpose. More like adjoint of A is A inverse. Mod of A inverse equal to 1. Oh yeah, wait. A transpose for determinant is the same thing as A का determinant, and A inverse for determinant is the same thing as 1 upon determinant of A. So determinant of A squared is 1. So which makes sense क्योंकि तुम्हारे जो column vectors हैं वो unit vectors होने चाहिए, right? They must be unit vectors for this to happen. तो हाँ, तुम्हारा determinant 1 हो सकता है, negative 1 हो सकता है. तो D1 नहीं है, not necessarily it can also be negative 1. So no, C is looking correct because adjoint of A being A transpose, because of course A times A transpose, that is just giving this identity matrix, or determinant of A is 1 anyway, then yeah, that just means कि it's gonna work. But it's not 1, but okay, only when order is 2, but not if it's 3. अगर 3 है, then it's not necessary कि वो जो ऐसा काम करे, because A times A transpose, that is yeah, that's the identity matrix. And so identity matrix times determinant of A upon determinant of A, but determinant of A is what, plus minus 1, तो actual में वो अलग हो जाएगा. Right. So no, C is not generally true. Okay. जब n जो है order जो है वो even number है, then it is true, but not generally. So B is correct and A is correct. That's all it is, A and B. Let's go to 86th. A line passing through some point and divides the area bound by this. Okay. And the x-axis in the ratio 1:2 graph is good. So x equal to e power y or natural log x, whatever. Natural log x, something like this. ये negative asymptotic instead of यहाँ पे 1 पे 0 हो जाता है, right? And then okay, that's first curve और दूसरा curve है negative natural log x, so इस type से चलेगा. Okay, a line passing through 1,0, so through this point, okay, and divides the area bound by y equal to, again, the y-axis. So ये area इसको divide कर रहा है some ratio में. The ratio is 1:2. Okay, cool. If the line cuts one of the two curves in exactly one point, then the slope of the line may be.
one of the two curves in exactly one point. But wait, isn't this natural log x? तो इसका slope जो है हमेशा 1 upon x, and this is decreasing actually because slope is decreasing, but this guy's slope is constant, so it's gonna cut it. Yeah, it's gonna cut it at 2 points no matter what. How can this be? That doesn't make sense actually because it has to cut it at 2 points. Oh, one of the two curves in exactly 1 point. Well, yeah, I mean, okay, does cut one. इसको तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो सही है. ओके, सो अगली लाइन में भी तो इतना बुरा नहीं है, मुझे सिर्फ ये एरिया बता के दो, वो भी इतना हार्ड नहीं है. सो जस्ट इंडिकेशन ऑफ, yeah, it's going from something like that. It's natural log of x dx, but it's going from 0 to 1. 0 पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है, राइट? इसलिए अपन ये पहले भी कर चुके हैं. इसका आंसर शायद 1 अपॉन ही होगा, आता है कुछ भी, आई डोंट नो. सो इसको जनरल कैसे करते हैं? x इंटू नेचुरल लॉग x. तो इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, x स्क्वायर्ड अपॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, सो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, sorry 1, come on, मैंने x लिखा है, so 1 into natural log of x. Yeah, that's gonna be what? X natural log of x indefinitely मैं क्या कर रहा हूँ, natural log of x. Okay, and minus integration of 1, so minus x basically. Okay, so it's just x into natural log of x minus 1, and it's going from 0 to 1. well, जब तुम 1 पुट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपने आप 0 हो जाता है, बट जब तुम 0 पुट करते हो that is a problem because 0 पे natural log of x defined नहीं. Yeah, so what? This is going to be just x natural log of x minus x. ये जो भी लिमिट अप्रोच करती है, that's the thing. Well, you know कि x to the power of 1 upon x approaches what? What was I gonna do? Sorry. हाँ, तो जब तुम 1 पुट करोगे इसमें ये तो गायब हो जाएगा, जब तुम 0 पुट करोगे तब ये गायब हो जाएगा, बट 1 minus 0 तो फिर ये रहेगा स्टिल. Okay, so that's just -1. और जब तुम इसमें 0 पुट करोगे तो ओ या 0 पुट करने पे वो गायब होता है, मैंने तो दिखाया नहीं ना. तो ये जो है as x tends to 0, this actually does approach 0 because x की पावर 1 upon x it approaches 1. कैसे, अब मुझे मत पूछो यार, इसका 1 upon x कर दो और फिर उसका डेरिवेटिव लो, फिर 1 upon x upon 8 1 upon x स्क्वायर, फिर यहाँ जगह नेगेटिव x और ये चीज अप्रोचेस 0. सो डन. दैट मीन्स कि हाँ ये चीज -1 है, ये इंटीग्रल इज जस्ट -1. अदरवाइज तुम इसको अलोंग y भी इंटीग्रेट कर सकते हो. सो इट्स जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम, सो y इक्वल टू 1 टू infinity then to 0 actually. Sorry, y does go to infinity. Yeah, so infinity to 0, right? Y goes from infinity to 0 of what basically. या फिर तो इसको 0 to infinity लो ना, so integration 0 to infinity, और ये जो x values है that's just e power y and then dy, so it's what e power y basically, बस उसका इंटीग्रल वही रहता है. so it's just e power is this infinity or what? It cannot be e power infinity minus 1. No, simply not correct about this thing. This is supposed to be natural log x, right? And oh sorry, ये है y equal to natural log x. So ये अलग एरिया हो जाएगा. It's got to be e power negative y in that case because, sorry, 0 to negative infinity in that case because ये actually natural log x वाला curve है, and that means it's this thing which is also -1, so it's very correct. थिंग इज कि ये जो साइन एरिया को छोड़ो, नॉर्मल एरिया की बात करते हैं, इज जस्ट 1 एंड दिस एरिया इज जस्ट 1, राइट? ये जो एरिया है दैट्स कॉल्ड दिस, आई डोंट नो, ये जो भी स्लोप होगा ये ले लेंथ तो 1 है, सो tan थीटा m जो भी स्लोप है, राइट? तो इसका ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m, राइट? तो ये एरिया विच इज 1, so 1 plus half m upon 1 minus half m, that is 2 upon 1. There we go. Yeah, so 1 plus half m equal to 2 minus m, so 3 upon 2m goes, so m is just 2 upon 3
और तुम m इक्वल टू -2/3 भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हें सेम टाइप ऑफ चीज देगा, राइट? सो 2/3 एंड -2/3, राइट? सो 86 का बी एंड सी। नेक्स्ट 87th, three circles with with different radii cut each other orthogonally. Their centers C1, C2, C3. Then ये क्या है? D C1, C2, C3 can't be equilateral. Okay, I think ये triangle चाहिए था. Triangle C1, C2, C3. So it can't be equilateral. It can't be right. So these all of these cut each other orthogonally, right? तो अगर दो circles orthogonally cut कर देते हैं, just means कि R1 squared plus R2 squared equal to D squared, right? तो हाँ, you can just change R1 R2 like that, right? What's the big deal? Okay, what do we know about this thing? Ki something squared, something else squared, something else squared, something else squared. What's the big deal? क्या complication है इसमें? So it can't be equilateral, it can't be right angle. Why can't it be? I think I said. I don't know यार, ये तो अच्छी। लेट्स से तुम्हारा ऑलरेडी दो सर्कल्स थे, अब तुम्हें तीसरा सर्कल चूज करना है सच दैट दिस हैपेंस। या तो r1 square plus r2 square equal d square, but r1 square plus r3 square equal to let's say d2 square, no, d1 square, and r2 square plus r3 square is equal to d2 square. So once you know कि d क्या है और ये क्या है, right? तो the thing is कि वो जो power of point है for that circle, that's actually the same thing, because r3 squared equal to d1 square minus r1 squared equal to d2 square minus r2 square. So जो c2 की power of point है, c2 की जो power है with respect to these first two circles, sorry, हाँ, sorry, जो c3 की power है with respect to first two circles, that is the same for both circles, and that means कि वो उसके radial axis पे lie करता है। ओके, बट सिमिलरली तुम कह सकते हो कि जो सेकंड सर्कल है वो इनके रेडियल एक्सिस पे लाई करता है और ये इसके रेडियल एक्सिस पे लाई करता है, सो ऑन, राइट? सो डज दिस एक्चुअली मेक सेंस? व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? क्या वो ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? ओके, तो दो सर्कल्स है जो कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, राइट? उनकी जो रेडियल एक्सिस रहेगी उसमें तुम्हें तीसरा सर्कल चाहिए रहेगा। क्या वो रेडियल एक्सिस बाहर हो सकती है? नहीं ना, वो हमेशा इतने ही रीजन में तुम्हारा पॉइंट घूम सकता है। दैट मींस कि वो हमेशा एक्यूट रहेगा तुम्हारा ट्रायंगल, इट कांट बी ऑब्ट्यूज, ऑफ कोर्स। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एंड समहाउ रेडियल एक्सिस बाहर लाई कर रही है? ऐसा हो सकता है? So, अगर सपोज एक सर्कल बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है फॉर एग्जांपल, then maybe ऐसा हो सकता है, because now this will cut orthogonally, something like this. I don't know यार, बहुत अजीब हो रहा है, and then the radial axis will in fact lie outside. Maybe it can actually lie outside. Come on. You know कि ये जो है, yeah, for this guy just noted d1 square minus d2 square is equal to r1 square minus r2 square or something like that, and r1 square minus r2 square. That's why 8 point. Okay, this is getting very bad. You know कि ये जो भी लेंथ है, ये लेंथ स्क्वायर minus that length square is just the same thing as r1 squared minus r2 squared or something like that. So and you don't know कि ये जो t value रहेगी, it's actually bigger than that.
राइट, इट्स राइट एंगल्ड। सो अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो इट्स डेफिनेटली इट्स राइट एंगल, तो हो ही नहीं सकता ना, ये इतने एंगुलर रीजन में रहने वाला है, ये वाला जो पॉइंट रहेगा इन एनी केस, एंड दैट मीन्स या इट इट कैन नॉट गो आउटसाइड, क्योंकि राइट ये जो लाइन रहेगी विद द सेंटर, दैट मीन्स नहीं हो नहीं सकता, ये ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। सो बी इज एटलीस्ट करेक्ट। कैन इट बी इक्विलैटरल? ऑफ कोर्स इट कैन बी। कांट बी राइट एंगल? yes, क्योंकि similarly right angle is like the limiting case for this, isn't that right? Yeah, ये राइट एंगल नहीं, इनफैक्ट हो सकता है, ये राइट एंगल हो सकता है अगर यहाँ पे, ओके ये दोनों एंगल्स में से कोई भी राइट एंगल नहीं हो सकता, राइट? ओ बट फिर तुम सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो कि इन दोनों में से कोई भी राइट एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइक तुमने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया जहाँ पे राइट एंगल है, तो फिर तुम बोल सकते हो ना कि इन इन दो सर्कल्स की जो रेडियल एक्सिस रहेगी, राइट, सो इनके सेंटर्स के बीच में होना चाहिए ये पॉइंट, और फिर ये एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे आखिर हो सकता है? राइट, रेडियल एक्सिस कांट बी देयर, so it doesn't make sense. Right, for that to happen actually you just have r1 square minus r2 square, the same thing as d square, and that doesn't make sense. So that's it, it can't be a right angle, it can't be obtuse, so b and c, इस आंसर b and c। यार ये तो बहुत ज्योमेट्री टाइप का हो गया, ये जेई में नहीं पूछते। Okay, whatever, I'll see you guys in the next video.